हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नैनो पार्टिकल्स। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ नैनो पार्टिकल्स, what are the structure of nanoparticles, classification of nanoparticles, synthesis of nanoparticles, size dependent properties of nanoparticles, limitations of nanoparticle, and at last application of nanoparticles. Now, why nanoparticles are so important in our daily life? So we all know that the field of nanotechnology has been increasing popular during recent years. Nanoparticles are the core of nanotechnology. Nanoparticles are the incredibly tiny particles with a size of less than 100 nanometers and can comprise carbon, metal oxide, or organic substances. The nanoparticles have been distinct physical, chemical, and biological properties compared to their counterpart as larger size, increasing chemical reactivity or stability, a large surface area relative to the volume, greater mechanical strength, and all contribute to this effect. There are many uses of nanoparticles because of their specific properties, and these properties we are discussed in our upcoming lectures. Now, there are many uses of nanoparticles because of their specific properties. Nanoparticles differ from one another in size, shape, dimensions, in addition to their materials. Now, nanoparticles typically have a dimension of less than 100 nanometer. Scientists around the world has recently become interested in nanotechnology because of their potential application in wide range of fields including catalysis, electronics, medicine, cosmetics, food, industries, etc. Okay, now starting with nanoparticles. What are nanoparticles? Now, the prefix nano comes from the Latin word nanus, meaning dwarf or tiny. With convention of international system of units, it is used to indicate a reduction factor of 10 raised to power 9 times. That is, we all know that 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. Now, what are nanoparticles? Nanoparticles हमारे पास क्या होते हैं? Nanoparticles tiny materials, ठीक है, टाइनी मटेरियल्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नैनोमीटर स्केल के ऊपर और जिनका साइज वेरी करता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, उनकी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग होती है जो हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स, कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स। इनकी किसके बेस पे क्लासिफिकेशन है? उनके ओरिजिन के बेस पे, शेप के बेस पे, साइज के बेस पे। ये हम सारा अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? नैनो मटेरियल्स आर डिफाइंड एज द मटेरियल विथ साइज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर एंड इन वन ऑफ द डायमेंशन दे हैव हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो लैडिंग टू द प्रॉपर्टी वेरी फ्रॉम बल्क। देखो, नैनो मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं? नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल जिनका साइज अगेन किसके बीच में होगा? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होगा और जिनकी एटलीस्ट एक डायमेंशन किसके ऊपर होगी? नैनो स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। एक तो करेगी ही करेगी, दो तीन भी कर सकती है। उसके बाद है नैनो साइंस। नैनो साइंस क्या है? नैनो साइंस है द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ कंडेंस्ड मटेरियल एट नैनो स्केल लेवल। एंड एट लास्ट, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी जो इन सब की चीज़ों के बारे में हमारी डील करती है। It is a technology of material that deal with a small dimension materials usually in the range of 1 nanometer to 100 nanometers, ठीक है। अब आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। थैंक यू।